Hello friends, welcome to this very important lecture of DOC. आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ग्रामर को बना सकते हैं, लेकिन ग्रामर को बनाने से पहले उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. In this lecture, we will try to understand the various concepts that lead us to produce the grammar of a given language. So, शुरुआत हम करते हैं grammar के basic concepts से. So, when we start learning the grammar of any language, we always start with token, and that token is basically the elementary part of a program. Elementary part of a grammar. जब भी बात हम किसी भी लैंग्वेज को समझने या सीखने की करते हैं तो शुरुआत हम टोकन से करते हैं. और टोकन क्या होता है? तो टोकन आपका किसी भी ग्रामर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, यानी कि जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. When we talk about token always act as an elementary part of a grammar, which can't be further indivisible. Like, जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर टोकन आपका क्या होगा? तो वहाँ पर टोकन आपका अल्फ़ाबेट होगा. अगर हम हिंदी की बात करें तो वहाँ पर हमारा टोकन स्वर होगा. यानी कि हर लैंग्वेज में आपका टोकन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, और जिसकी मदद से जिसको ग्रुप करते हुए हम वर्ड्स बनाते हैं, जिसकी मदद से हम अल्फ़ाबेट बनाते हैं, उसको ग्रुप करने से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ, और पैराग्राफ से हम लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं. In any language, we always start the process of learning the grammar from token, because with the help of the token, since it is not indivisible further, we can construct alphabets from token. By grouping the alphabet, we can construct the word, then sentence, then paragraph, and then we have the fluency in that language. So basically, token is considered as alphabet and all these things are basically considered as a token in a given in a corresponding language. So in TOC also we start with the alphabet as a token. So what is alphabet? So what is basically the alphabet in TOC? TOC में alphabet क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. Alphabet को समझने के लिए हमें यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे. In order to understand the concept of the alphabet in TOC, we have to understand two of the very important concepts, which are basically terminal and non-terminal, which is sometimes known as variable. And this variable you can recognize it to be basically the variable of the language which we use in the computer language. So that terminal is basically the lowercase characters, that is A, B, C, etc. We always write the terminals in the lowercase character, and non-terminal is basically written as uppercase characters. So it becomes important that when we talk about
terminal and non-terminal, the only difference that we have, that in terminal we consider the lowercase character and in non-terminal we consider the uppercase character. So what is alphabet basically? Alphabet को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका terminals का collection माना जाता है. An alphabet is basically represented by sigma and it is considered as a collection of terminals. For example, this is alphabet 1 and this alphabet 1 can be defined as suppose AB. So AB is basically the elements of alphabet. So please make sure this alphabet is not as similar to the alphabet that we use in a grammar of English language. आपको ये समझना थोड़ा ज़रूरी होगा यहाँ पर कि जो अल्फ़ाबेट हम इंग्लिश के ग्रामर में यूज़ करते हैं वैसा अल्फ़ाबेट यहाँ पर नहीं होता. थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि हम बात मशीन्स की कर रहे हैं. So we can also take another example, sigma 2 as 0 and 1. And 0 and 1 can be considered as the elements of alphabet. So 0 और 1 आपका elements के तौर पर जाना जाएगा किसी भी जाना जाएगा alphabet 2 के लिए. So we have to remember that alphabet is represented by sigma and it consists of certain elements. हमें समझना होगा कि alphabet sigma होता है और इस sigma के अंदर आपके elements होते हैं. So let us now move further to the concept of the word, because in grammar, after understanding the alphabet, we understand how to basically construct the word. लैंग्वेज में ग्रामर में हमें पता होता है कि अल्फ़ाबेट या फिर जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं उसके समझ अगर हमें हो जाए तो हम उसकी मदद से वर्ड को कंस्ट्रक्ट या उसको बनाने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज बेसिकली द वर्ड इन TOC? Word is also known as string in TOC, and in computer science we basically know that when the collection of alphabet with the collection of the alphabet we obtain a string. Word को कभी-कभी हम string के तौर पर भी जानते हैं और ये हमें पता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में हम words को मिला करके string बनाते हैं. So a word can be represented by W, fine, and it is basically a sequence of terminals taken from it is a sequence of alphabets. It is a sequence of alphabets taken from the set of terminals. So अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर ही हमारा वर्ड बनता है, इसलिए इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि आपका वर्ड और स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस होगा जो कि टर्मिनल्स के सेट से लिया गया है. इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज we have the alphabet as AB, and corresponding to this alphabet I can construct a word W1 as A B. Similarly, I can also construct a word like ABA
B A A B A. So what we have to make sure that when we are constructing the word or a string from a given alphabet, there is no restriction over the length. You can have the string or the word of any length. हमें एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम वर्ड बनाते हैं अल्फाबेट से तो उस वर्ड के लेंथ के ऊपर हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यानी कि हम उस लेंथ को जितना चाहे बड़ा घटा सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है. So basically that is the concept of the word and string. So there are various concepts associated with the concept of the word and string which I will discuss in my next lecture. हम word और string से associated कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम अपने अगले लेक्चर में समझते हैं.